Next question. Details about the portfolio of the shares of an investor is as below. एक इन्वेस्टर ने ये 3 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है. What is the number of shares? What is the price and what is the beta is given to us. The investor thinks that the risk of the portfolio is very high and wants to reduce risk, that is reduce the portfolio beta to 0.91. Of course अभी सबका बीटा है ना एक से ज़्यादा ही है, तो उसका वेटेड एवरेज 1.2 और 1.6 के बीच में ही होगा. उससे उनको क्या करना है, रिस्क रिड्यूस करना है. He is considering two below mentioned alternative strategies. There are two strategies: dispose of part of the existing portfolio to acquire risk-free security, or take appropriate position on Nifty Futures which are currently traded at 8125. Each Nifty point is worth rupees 200. यानी lot size दे रखा है. You are required to determine. There are 5 questions that they have provided. First, compute the current portfolio beta. Second, value of the risk-free security to be acquired. Third question, number of shares of the each company to be disposed of. Fourth question, number of the Nifty contracts to be bought or sold. Value of the portfolio beta for 2% rise in Nifty. So these are the 5 questions that they have provided. I request all of you to go through the question and tell me answer of the first question in the chat box. The portfolio beta. I request all of you to write an answer. Calculation of current beta of the portfolio. Investment is made in 3 securities A, B and C. Amount of investment, it is 3 lakh into 500. Next is 4 lakh into 750 and 2 lakh into 250. That is the amount of investment. So it is 1,500 lakhs, 3,000 lakhs and 500 lakhs. So the total amount of the investment is 1,500 plus 3,000, 4,500 plus 500, that comes to 5,000 lakhs. Weight or proportion in which the investment is made, 1,500 upon 5,000, that is 0.30. Then 3,000 upon 5,000, that comes to 0.60. And lastly 500 upon 5,000. That comes to 0.10. So the total of all of them is 1. Multiplying with the respective beta, 1.40, 1.20 and 1.60. That's it. We understand it's the weight into beta. So it is 0.42, 0.72 and 0.16. So the total is 1.3. तो अभी का जो रिस्क 1.3 बीटा है ना फ्रेंड्स, उसको रिड्यूस करना है. कहाँ तक रिड्यूस करना है? 0.91 तक. ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है. I request you to give answer for the second part of the question. What is the value of the risk-free security to be acquired? That is the question. हमको रिस्क रिड्यूस करना है 0.91 तक, और उसके लिए हमने 2 मेथड सोचा है. पहला मेथड ऐसा सोचा है, you can say that technically it is churning of the portfolio. हम लोग क्या करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट्स निकाल देंगे और उतने अमाउंट का रिस्क फ्री सिक्योरिटी हम लोग बाय करेंगे.
डिस्पोज ऑफ पार्ट ऑफ द एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो टू अक्वायर द रिस्क सिक्योरिटी, यानी क्या होगा, रीशफलिंग ऑफ द पोर्टफोलियो। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने अमाउंट का रिस्क फ्री सिक्योरिटी अक्वायर किया जाएगा। प्लीज पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। Dear students, this kind of question is more covered when we study our very simple chapter portfolio management. Yet this is a question wherein we have the combination of the concept, so I have covered it over here. तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि how we should be able to reach to the portfolio beta 0.95 by reshuffling the investment. So we understand something like this. Everybody is requested to pay attention. We understand that so the beta of the portfolio is equal to weight of existing portfolio into beta of existing portfolio plus weight of risk-free security into beta of risk-free security. ऐसा हम लोग समझते हैं। हमको बीटा कितना चाहिए, हमको बीटा चाहिए 0.91। Weight of existing, that we do not know. Beta of the existing is 1.30. What is the weight of risk-free? That we do not know. I know that so the beta of the risk-free security is 0. It means that so the weight of existing is 0.91 divided by 1.3. That comes to 0.70. यानी हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में 70% इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा और बाकी का 30% हमको रिस्क फ्री में शिफ्ट करना पड़ेगा। सो वी अंडरस्टैंड इट्स द amount of risk-free security to be acquired is rupees 1500 lakhs. कैसे होगा, 5000 lakhs into 0.3, ऐसा हम लोग समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो हम लोग हर एक कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। अगेन प्लीज राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सो फ्रेंड्स, देयर आर 3 सिक्योरिटीज इन विच वी हैव मेड इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी एंड सिक्योरिटी सी। हमने कौन से प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया है, इट इज 3, 6 and 1. That is the proportion in which we have made investment. So we understand that say it is 1500 lakhs into 0.3. That comes to 450 lakhs of A. 1500 lakhs into 0.6. That comes to 900 lakhs. And last में 1500 lakhs into 0.1. That comes to 150 lakhs. This is the way we will sell the investment in this proportion only. तो हमारा existing portfolio का weight disturb नहीं हो। 450 plus 900 plus 150, that is the weight is 1500 lakhs. Market price of the share that is already provided to us. It is 500, 750 and 250. So we can compute the number of shares to be disposed of. क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, what is the number of shares to be disposed of? So it will be calculated as 450 lakhs divided by 500. That comes to 90,000 shares. Then it is 900 lakhs divided by 750. That comes to 1,20,000.
then it is 150 lakhs divided by 250. So that comes to 60,000. So this is the way the number of shares to be disposed of can be calculated. So importantly, we are required to dispose of the investment from the existing portfolio in existing proportion only. तो ही क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा ओवरऑल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो 0.91 हो जाएगा. ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस में आपको बता रहा हूं, ये 1500 है, उसमें से 450 चला गया, यानी ये कितना हो गया 1050 ए में इन्वेस्टमेंट. देन आई एम सॉरी, ए में इन्वेस्टमेंट है, हाँ सॉरी, ए में इन्वेस्टमेंट है 1500, उसमें से 450 जाएगा. बी का जो 3000 है उसमें से प्रोपोर्शनली रिड्यूस होगा, और सी में 500 है. सो 1500, 3000 एंड 500 तीनों में से प्रोपोर्शनली रिड्यूस होगा. सो दिस इज 900 रिडक्शन, and this is 150 reduction. तो ये 350 हो जाएगा और ये 2100 हो जाएगा. And we have made investment of an amount of 1500 in risk-free security. तो ये हमारा रिवाइज्ड पोर्टफोलियो हो जाएगा. पहले क्या था 1500, 3000 and 500. हमने तीनों में से क्या किया 30%, 30%, 30% विड्रॉ किया. 1500 का 30% यानी 450, 3000 का 30% यानी 900, 500 का 30% that comes to 150. So 450 plus 900 plus 150, इन तीनों को मिला के कितना हो गया 1500. वो हमने रिस्क फ्री में अभी इन्वेस्ट कर दिया. Now when you will make the computation of the revised beta of the portfolio, तो वो exactly 0.91 हो जाएगा. 1050 upon 5000 that is 0.21. 2100 upon 5000 0.42. 350 upon 5000 0.07, and this is 0.30. बीटा कितना है 1.4, 1.2, 1.6 and this is 0. Point 21 into 1.4 that comes to 0.294. 0.42 into 1.2 0.504. 0.07 into 1.6 0.112. ये 0 है. ओवरऑल बीटा कितना हो जाएगा आपका 0.91 हो जाएगा जो आपको चाहिए. Fourth question, number of Nifty contracts to be bought or sold, that is a question. Value of the portfolio beta for 2% rise in Nifty. ये fourth and fifth question का आंसर आपने कैलकुलेट करो and put answer in the chat box. Answer for the fourth question. Number of contracts to be sold. Sold क्यों? Because we want to reduce the risk. कैसे होगा? Value of the portfolio into beta of portfolio minus beta required divided by futures index value into lot size. Value of the portfolio is 5,000 lakhs. Beta of the portfolio is 1.30. Beta required is 0.91 divided by futures index value into lot size. So the question says that so take appropriate position on the Nifty Futures which are currently traded at 8125. यानी हमको futures value question में दे रखा है 8125 and lot size is 200.
5000 into 0.39. So the answer comes to exactly 120 contracts. That is the way the number of contracts to be sold can be calculated. Answer for question number 5. In that say, question में पूछा that say value of the portfolio beta for 2% rise in Nifty. तो क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो. कैसे करेंगे? बीटा मेजर्स परसेंटेज चेंज इन आरपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन आरएम. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दैट्स द रिटर्न इंक्रीजेस बाय 2%. So percentage change in RP is equal to, listen carefully, 1.3 जो आपके बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है into 2% किया जाएगा. That comes to 2.6%. अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन निफ्टी. सेल वैल्यू माइनस बाय वैल्यू. What is the futures index value? 8125. What is the lot size? Lot size is 200. How many contracts have been sold? 120. तो ये आपका सेल वैल्यू हो गया. माइनस इसमें क्या हो गया? 2% का इंक्रीज हो गया. सो 8125 इंटू 200 इंटू 120, ये जो भी वैल्यू है प्लस 2%. यानी इन शॉर्ट क्या होगा? 2% का हमको लॉस हो गया, क्योंकि निफ्टी में 2% राइज ऐसा दे रखा है. सो इट इज 1950 lakhs. वो प्राइस पे आपने बेच के रखा था और प्राइस हो गया 1989 lakhs. So there is a loss of 39 lakhs. This is what we understand. Okay. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल गेन और लॉस. उस पर क्या करेंगे? शेयर्स प्लस निफ्टी. जो हमारे शेयर्स है उसका प्राइस क्या होगा? 2.6% से इंक्रीज हुआ. सो 5000 lakhs into 2.6%. This is what you gain. So that comes to 130 lakhs. और निफ्टी में क्या हुआ? 39 lakhs का लॉस हो गया. यानी ओवरऑल क्या होगा? 91 lakhs का प्रॉफिट हुआ. This is what we understand is the overall gain or loss. So return of the portfolio, overall gain divided by value of the portfolio. 91 lakhs divided by 5000 lakhs into 100. 1.82%. हम लोग इसको टेबल बना के भी कर सकते हैं. पोर्टफोलियो लिखेंगे, निफ्टी लिखेंगे, सेल वैल्यू बाय वैल्यू, ऐसा करके भी हम लोग कर सकते हैं. फाइनली बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो. बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज परसेंटेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो divided by
परसेंटेज रिटर्न ऑफ द मार्केट। मार्केट में कितना परसेंट है? 2% है, 2% का रिटर्न है, और हमारे पोर्टफोलियो में 1.82। तो हमारा बीटा क्या हुआ? 0.91। जो हमको चाहिए था वो मिल गया। सो यहाँ पे क्या हो गया? बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 0.91। whatever we wanted, that is what we are able to realize। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं ना, उसके पहले हमको पता है कि इसका आंसर 0.91 आने वाला है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंटली रिमेंबर दैट द इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर्स आर वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूरा का पूरा आंसर आपको बताना है। यू मे शो इट लाइक दिस, यू मे शो इट द टेबल टू फाइंड द ओवरऑल रिटर्न, और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला करके आपको सब्सटेंशिएट करना है कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 0.91, इट इज द सेम एज व्हाट वी वांटेड। हमको कुछ लिखना नहीं, हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है। बट दिस इज द वे से दे आर एक्सपेक्टिंग द एंटायर आंसर फ्रॉम यू, नॉट वन लाइन आंसर कि बीटा 0.91 हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा नया है कि हमको कितना अमाउंट रिस्क फ्री में ट्रांसफर करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा रिस्क 0.91 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, जो भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे अमाउंट, उसकी वजह से व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी आर गोइंग टू सेल। और ये मुझे लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हमको एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का इंटरनल प्रोपोर्शन चेंज नहीं करना है, रैंडमली कोई भी सिक्योरिटी को बेच नहीं देना है। हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रपोर्शन है 361, वही प्रपोर्शन में हमको ये 1500 लाख रुपीस से रियलाइज करने हैं। कंसीडरिंग द मार्केट प्राइस वी फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद जस्ट ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था दैट से हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, और ओवरऑल हमारा जो बीटा है वो 0.91 हो जाएगा। सो दिस वाज जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द आंसर। फोर्थ में सिंपल, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी सोल्ड, क्योंकि हमको रिस्क रिड्यूस करना है। उन्होंने बॉट सोल्ड ऐसा दोनों दे रखा है, पर हमको पता है कि सेल ही करना है। फिर हमको दे रखा है दैट्स द आरएम रिड्यूसेस, उसके बेसिस से हमने रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो रिडक्शन कैलकुलेट किया, सॉरी इंक्रीज है, वो इंक्रीज कैलकुलेट किया। प्रॉफिट और लॉस निफ्टी में कैलकुलेट किया, हमारा जो पोर्टफोलियो उसमें प्रॉफिट लॉस फाइंड किया, ओवरऑल कैलकुलेट किया, और फिर बीटा 0.91 आ जाएगा। Friends, in certain questions we will be provided with the information this much change in the nifty, और कुछ questions में ऐसे दे सकते हैं this is the change in the value of your portfolio। तो उसके ऊपर से आपको क्या करना है? परसेंटेज चेंज इन आरएम कैलकुलेट करना है।